राइट वी आर लाइव। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम बहुत दिनों बाद लाइव आए और आप सबसे मुलाकात हो रही है। सो वी आर हियर टुडे to discuss speech language milestones and developments, right? And red flags and myths associated with them. हमने एक कॉल लिया था अपने ग्रुप मेंबर से और हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, काफी सारे कंसर्न्स हैं और जो बहुत बेसिक हमारे जनरली जो परसेप्शंस हैं उसके अंदर मिथ्स बहुत सारी हैं। और आई थिंक बिफोर वी डेल्व इनटू डीपर इनटू इट हमने सोचा कि पहले उन कॉमन इश्यूज को एड्रेस कर लिया जाए। सो हमारे साथ हैं सामिया बिलाल खान। शी इज अ सीनियर पेडियाट्रिक स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट और वी विल हियर मोर about her from her herself. Sabia, over to you. Assalamu alaikum, everyone. First of all, thank you for having me here, Ishroon. It's one of my passions to talk to parents and spread awareness. I'll introduce myself a little bit. I'm Saamia. I've been working for 11 years now. I graduated from Ziauddin in 2011. After that, I taught there. I have supervised students as well. I was heading the speech therapy department of KDSP for 5 years, and now I'm running my own clinic in Gulshan, Karachi. That's wonderful. So I'm really glad we have someone who's actually perfect expert to direct us and to let us know more. अच्छा जी, सामिया मुझे ये बताएं कि when does the first word come? बच्चों कब बात करना शुरू करते हैं? क्या वो कॉमन एज है? इसरो लैंग्वेज तो खैर बहुत पहले से ही आना शुरू हो जाती है। जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होती है, बेबीज की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत पहले से आना शुरू हो जाती है। देर जैसे आपने सुना भी होगा कि बेबीज जब वूम में होते हैं, व्हेन देयर इनसाइड द मदर, देयर स्टिल लिसनिंग टू द मॉम, तभी वो आवाजें सुन रहे होते हैं। व्हेन देयर बोर्न, देयर रिस्पॉन्डिंग टू अ मदर्स वॉइस अ लॉट मोर देन other people's voices, उसके बाद फिर वो जो कनेक्शन होता है उसकी वजह से मदर्स जितना ज्यादा बच्चों से बात कर रही होती है उतना ज्यादा बेबीज का रिस्पॉन्स जल्दी आना शुरू होता है। दे स्टार्ट टू स्माइल, दे स्टार्ट टू रिस्पॉन्ड। बाय द टाइम दे आर 3 months 4 months old, they're smiling at you. फर्स्ट वर्ड जहां तक उसकी बात है वो 12 महीने पे पहले साल में हमें नजर आ जाता है। बच्चे को वो वाली अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि जब मैं मामा बोलूंगा तो फिर मामा आ जाएंगी। I have my baby, she's 11 months old, mashallah, and she knows that, whenever someone would say meow, she goes like cat. So she has associated that sound with the word cat. Because whenever we would see a cat, हम उसको बताते हैं कि this is a cat, and काफी दफा वो बिल्ली बोल भी चुकी है तो उसने एक word associate कर लिया है उसके साथ। So 12 महीने के जब हो जाते हैं बेबीज तो पहला वर्ड हमें नजर आ जाता है। अगर 12 महीने पे नहीं आ रहा तो हम 14 months तक वेट करते हैं, उसके बाद यू शुड सी अ स्पीच थेरेपिस्ट। अच्छा सामिया, एक क्वेरी जो बहुत में पढ़ने को हमें नजर आती है, can a parent cause a language delay? Is it genetic or is it our environment? देखिए, पेरेंट्स intentionally cannot ever cause a language delay. I don't think any parent would want that. But yes, there is research that supports the idea of children getting it in genes. Family में language delays run करते हैं. So if there's family history on the father's side or on the mother's side of having language delays, या खुद father ने देर से बोलना शुरू किया या mother ने, so we do find that the child has started to speak late as well. But mother or father would never cause it intentionally. Family histories do play a part in that. But one thing that we do as parents is give them a lot of screen time. That is one thing that can cause a language delay, and uske andar jo hai parents do play a part. So if I talk about that, parents causing a language delay, I think wo screen time ke through ho sakta hai, iske alawa nahi ho sakta. अच्छा, मैं इस पर बाद में आऊंगी क्योंकि ये वन ऑफ आवर मोस्ट प्रेसिंग कंसर्न्स है। मगर मुझे ये भी फिर पूछना था आपसे कि जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, जब हम घर के माहौल की बात करते हैं, आपको क्या लगता है हाउ मच डज दैट प्ले a role in affecting our child's development in speech? उसमें डिले मतलब अगर घर का माहौल बहुत violent है, बहुत disturbing है, do you think that plays a role? We have seen that children who have disturbed families, जिसके अंदर
mother and father are usually having arguments, या फिर family ज़्यादा healthy environment नहीं है family का, तो बच्चे do go into a shell, they don't want to talk too much. ऐसा होता है. But ऐसा भी होता है कि because people are fighting so much within the house or arguing so much, children actually start to scream and say words. It actually, is different for every child कि कौन सा बच्चा कैसा response देता है. Positive, जैसे ऐसे environments का कोई positive effect नहीं होता बच्चों के ऊपर. या तो you will see that a child is really not speaking too much, they don't want to interact, लेकिन language की understanding तब भी आ जाती है. ऐसा नहीं है कि बच्चा समझता नहीं है. रिसेप्टिव लैंग्वेज जो होती है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है, वो तभी आ जाएगी. बच्चा इंटरैक्ट कितना कर रहा है लोगों के साथ, वो इफेक्ट हो जाएगा. सो बोलना कब शुरू किया बच्चे ने, उसको कितनी इंटरैक्शन मिली, मदर ने उसको कितना टाइम दिया, फादर ने कितना टाइम दिया, कितनी बातें हुई, कितनी स्टोरीज सुनाई गई, कितनी पोएम्स राइम्स एक साथ बैठ के गाई गई, ये सब जो है मैटर करता है बच्चों के लिए. सो इफ there is no peace in the house, then the child is also not getting enough time for himself, right? So that plays a part too. Yes. Right. ठीक है. अब हम इस पर आ जाते हैं. हमसे सवाल आते जा रहे हैं और ये वो सारे सवाल हैं जो आज हम लेके भी बैठे हैं अपने साथ. So I'm very happy to see कि हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत engaged है. वालेकुम सलाम to everybody with here. अच्छा, आप ये बताएं कि can we spot symptoms of language delay before a child turns 12 months? क्या हम देख सकते हैं उसमें ये चीज? जी बिल्कुल देख सकते हैं. देखिए, लैंग्वेज जो होती है ना, it's not coming alone. There are lot of other things that are happening before a child has started to speak, so attention span होता है. सबसे पहली चीज जो आप नोट करोगे वो है joint attention. ठीक है, आपने बोला oh look car, और जैसे ही आपने पॉइंट किया बच्चे ने उस तरफ देख लिया, सो जहां पे भी आप पॉइंट करें बच्चा उधर देख रहा है. दैट इज कॉल्ड जॉइंट अटेंशन, पेइंग अटेंशन टू द सेम थिंग at the same time, so that is joint attention. अगर बच्चा ये नहीं कर रहा, by the time they're 8 months 9 months old, still you see कि आप point कर रहे हैं, बच्चा नहीं देख रहा है, तो you need to be concerned about it, pay more attention to it, sit with the child, show them things, point, take their hands, बच्चे के हाथ से point करवाइए चीजों पे, so that they know कि pointing ये चीज होती है. अगर mama is talking about something, I also look at it. एक तो ये हो गया. दूसरी बात, when you're calling someone, this is also a part of joint attention, but I'm specifying it because अभी बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि वो इस चीज पे भी attention pay करें. When you're calling someone in the family, for example, mama, call mama, so 10 months पे बच्चे इधर उधर देखने लगते हैं. They're looking for mama, they want to know कि mama कहाँ है. अगर आपको नजर आ रहा है कि बच्चा actually is not looking for mom still, then you need to be concerned. The other thing that you need to know is that response to name. ठीक है, 12 महीने से पहले बच्चों को रिस्पॉन्स आ जाता है. 6 महीने पे आप उनके रिस्पॉन्सेस देख लेते हैं. you're calling them, they're looking at you, you're smiling at them, social smile आ जाती है. This is one more thing, they're smiling at you. So a lot of things are happening before the first word is coming in, so social smile हो गई, joint attention हो गया, response to name हो गया, looking for people हो गया. So these are the things that you need to look for before the word comes in. All right, ठीक है. अच्छा, अब हमारे सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि does screen time cause delay? क्योंकि अब तो ऐसा माहौल हो गया, everybody they have a gadget and बहुत कुछ सीखते भी हैं बच्चे, बट हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं. अब आप बताइए क्या किया जाए? क्या किया जाए? स्क्रीन को कम से कम रखा जाए, बट राइट नाउ आई थिंक मदर्स आर, ऑनेस्टली आई एम अ मॉम माई सेल्फ, सो मेरे बच्चे भी देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे होते, बट स्क्रीन टाइम डज कॉज लैंग्वेज डिलेज एंड आई कैन नॉट डिनाई दिस, बिकॉज इट कोविड में तो इतना ज्यादा मैंने बच्चों को देखा है. आई मीन आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ हाउ मेनी कंसल्टेशंस आई हैव गिवन in this 1 year, because and parents cannot help it, they're not doing it जानबूझ के, but it's just happening because they're working from home, live calls चल रही हैं, काम चल रहा है, तो बच्चों को busy रखने के लिए we give them gadgets, and उसकी वजह से जितने language delays सामने आए हैं, you have no idea. तो screen time की वजह से बिल्कुल होता है language delay, because I will tell you the reason why. It happens because the child is looking at the screen and the colors are changing so fast. Pictures change हो रही होती हैं,
राइम्स हो रही होती हैं, ठीक है, कॉन्वर्जेशन जो रियल कॉन्वर्जेशन होती हैं वो नहीं होती हैं। अगर बच्चा चाहे भी बात करना तो वो स्क्रीन से बात नहीं कर सकता, ठीक है। सो पहली चीज जो बच्चों की लैंग्वेज में आती है वो है इमिटेशन। दे कॉपी यू, आप जैसे बोलते हैं वो वैसे बोलते हैं। कैट बोलो वो भी कैट बोलेंगे, मामा बोलो वो भी मामा बोलेंगे, ठीक है। वो स्क्रीन टाइम के साथ नहीं हो सकता। इफ द चाइल्ड इज लुकिंग एट द स्क्रीन इट्स नॉट हैपनिंग, सो इसकी वजह से लैंग्वेज डिले होना शुरू हो जाती है। ऑल्सो बिकॉज स्क्रीन टाइम की वजह से अटेंशन स्पैन इफेक्ट होता है। अटेंशन स्पैन जैसे ही इफेक्ट होगा वैसे ही लैंग्वेज इफेक्ट हो जाएगी, बिकॉज जब बच्चा लैंग्वेज पे अटेंशन पे करता है तो ही वर्ड्स ब्रेन में स्टोर होते हैं। सो दे आर लिसनिंग टू यू, they're paying attention to the words, they're storing it in the memory, then using it later on. All of that gets affected. They're addicted to the screen. They're not really learning new words. अगर rhymes सीख ली हैं तो वो एक अलग बात है, rhymes जरूर सीख जाएंगे। Functional language cannot come through screen. It has to come through real conversations, real interactions. ठीक है। Yeah. अच्छा, अब बिकॉज हम सारे गैजेट फ्रेंडली हाउस होल्ड हैं and we've got a comment here, but showing them the right content of course for the limited time can cause vocabulary enhancement too. What would you say on this? Of course. देखिए, schools में आजकल admissions इतने मुश्किल हो गए हैं, my child goes to a school जहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है, they're not assessing children based on how much they know, because babies are babies, but how much competition is there. तो अगर आप एजुकेशनल टीवी की तरफ जाएं या फिर एजुकेशनल कंटेंट की तरफ जाएं, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड, बट इफ अ चाइल्ड नोज द नेम्स ऑफ एनिमल्स, कलर्स, शेप्स and doesn't know how to say want, दे दो, open door, stop, no more, ये नहीं पता है, तो फिर what is more important during the day? So everything in moderation is okay. आप अगर बच्चे को कुछ सिखा रहे हो, 20-25 मिनट वो दिन में देख रहे हैं, दैट इज ओके। मगर अगर उससे ज्यादा हो रहा है, 3 घंटे 4 घंटे बच्चा स्क्रीन देख रहा है, दैट्स नॉट हेल्थी। एंड इसके अलावा आई साइड इफेक्ट हो जाते हैं। सो देयर इज अ लॉट मोर हैपनिंग विद स्क्रीन टाइम। आई थिंक एजुकेशनल टीवी का भी ये, अगर आप बैठ जाओ ना बच्चे के साथ तो आप भी वो सब कवर कर सकते हैं। हाँ, you're absolutely correct. जब उन्होंने मेंशन किया है वोकैबुलरी इन्हांसमेंट, जब हम इस चीज की बात करते हैं तो आप मुझे बताएं कि पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन इस चीज को ज्यादा इन्हांस करता है वोकैबुलरी को, या यू थिंक कि हमें पर्टिकुलरली जो बेबी शोज हैं इस चीज के लिए वही दिखाने चाहिए? व्हिच डू यू थिंक इज मोर बेटर? I think it is always better to have real human interaction, because if the child is throwing something, you pick it up and you say, oh, let's pick it up, let's pick it up, let's put it back. Screen time में ये सब बच्चा नहीं कर सकता। Really किसी चीज को उठा के उसे वापस लगाना, let's pick it up, put it back, ये सब बच्चा नहीं सीखेगा स्क्रीन टाइम से, ठीक है। या अगर उसने कोई गलत कलर उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर उसने उठा लिया एंड यू आस्क फॉर द रेड, you still correct it and you say, oh, that's blue, that's right, okay, let's work on blue. Screen time में ये सब नहीं होता। गेम्स हैं जो ऐसा सिखाते हैं, गलत आप टच कर दो तो वो will still tell the name of the color. But the thing is that human interaction is always better. It has been there for years and it has been working out for children. Screen time is not bad, क्योंकि देखिए इस टाइम पे अगर आप बच्चे को बिल्कुल डिप्राइव्ड कर देते हैं किसी चीज से, एंड वो स्कूल जा रहे हैं, सारे बच्चों के पास गैजेट्स हैं, वो देखते हैं, एक बच्चे के पास नहीं है, तो वहां पे शायद बच्चा थोड़ा फील करे। बट इट ऑल्सो वेरीज फैमिली टू फैमिली, उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। सो मैं खुद अपनी बेटी को गैजेट देती हूँ, सो आई कैन नॉट बी लाइक, ओ माय गॉड मैं तो कभी नहीं देती, आई डोंट डू दैट। दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड नाउ, so yes, give gadgets, it's okay, but in moderation, just keep a check. फिर आप मुझे ये बताएं कि 12 months onward, even a little below it, let's say 6 months, अब तो 6 महीने के बच्चे भी कोको मेलन देख रहे होते हैं all. So इतने छोटे बेबीज के लिए till let's say 12 months, 18 months या 2 years also, क्या स्क्रीन टाइम आप कहेंगी कि ये इतना ठीक है, इससे ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए? देखिए, according to what I have observed and whatever I have read till now, क्योंकि मुझे इसके ऊपर बहुत पढ़ना पड़ता है क्योंकि मैं इतने पेरेंट्स से मिल रही होती हूँ। According to research, एक साल से पहले नो स्क्रीन टाइम शुड बी देयर। एक साल से पहले होना ही नहीं चाहिए कुछ भी स्क्रीन टाइम, ठीक है। लेकिन हम फिर भी दे रहे होते हैं,
लेकिन अगर आप दे रहे हो 20-25 मिनट, तो जस्ट मेक अप फॉर इट लेटर ऑन, इंटरेक्ट विद देम मोर, टॉक टू देम मोर, शो देम स्टोरी बुक्स, point at things in the storybook. So make up for it if you're giving them. एक साल के बाद 20 to 25 minutes, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो 1 घंटा, so this is what is allowed. ठीक है, अभी इस पे इससे ज्यादा कुछ भी होता है तो it's not recommended. राइट। हमारे पास इतने सारे सवाल आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमारी जो मैं आपसे पूछने वाली थी कि हैज कोविड इफेक्टेड द कोर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन? क्या कहना चाहेंगे? आपने आधा तो आई थिंक कवर कर लिया, बट देन so many people are listening to us. The language development, yes. Actually, there are two schools of thoughts according to speech therapists. जो speech therapist की अपनी discussions होती हैं, उसके हिसाब से मैं आपको दोनों बता देती हूँ. एक group of therapists believe that COVID की वजह से family interaction बहुत बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि they're together now, तो language आ रही है बच्चों की. The other group of speech therapists believe कि क्योंकि कोविड आ गया तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया एंड पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम, इस वजह से लैंग्वेज डिलेज होने लगे हैं. सो आई थिंक बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ द फैमिली वाज वर्किंग आउट. ठीक है, वो किस तरह से घर पे काम कर रहे थे, वो किस तरह से मैनेज कर रहे थे कोविड को, इससे बच्चों की लैंग्वेज उसी तरीके से इफेक्ट हुई है. अगर आपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, एंड ऑनेस्टली teaching language is not that difficult. I'm being very honest. If you're spending time with your kids for maybe 2 घंटे आप लग के उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना दिन में, 1 घंटा दोपहर में, 1 घंटा शाम में, it's more than enough to teach them language. And trust me, अगर आपने उस 1 घंटे में अपना भी फोन साइड पे रख दिया है, बच्चों के पास भी कोई गैजेट्स नहीं है. Exactly, because a lot of times the children are talking to us and we're going like yes, जी, okay, हाँ, sure. तो ये जो telegraphic speech है, एक वर्ड में हम जो जवाब दे रहे होते हैं, it's not helping them. So ask them questions, WH questions. What? Really? Wow. How? Why? When? Where? ये questions अगर आप पूछ रहे हैं उस 1-1.5 घंटे में, तो फिर लैंग्वेज आराम से आ जाए. If the child has having screen time, make sure that you're still spending time with them so that the language is not getting affected. If the child is having more screen time, जितनी limitations है उससे ज़्यादा, be assured that attention span होगा. So just keep that in mind. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास we've got so many questions over here. And मैं आपसे एक और सवाल पूछने आई थी. It just skipped my mind because I'm just reading some anywhere. किसी ने हमसे पूछा है कि what's your say? नहीं. How can moving from one place to another due to job affect speech delay? Being working parents, how can that be worked out? From one place to another, as in countries? Cities of the countries, and perhaps this is what I can make out. They've shifted from places. और language differences हैं. देखिए, अगर बच्चा, अच्छा, there are a lot of factors in this, so I will just try to cover it up. अगर बच्चा 1 साल से पहले किसी एरिया में रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थाईलैंड में रहा, ठीक है, और वो वहाँ ही उसने बच्चों के साथ पार्क्स में इंटरेक्शन किया है, शॉप्स में भी थाई बोली जा रही है, एंड उनकी अपनी लैंग्वेज है, और घर में जो है उसे स्क्रीन टाइम बहुत मिला है बिकॉज द मदर इज रियली बिजी विद स्टफ एंड द फादर इज आउट वर्किंग, एंड तो फिर आप जब पाकिस्तान आ रहे हैं वापस, तो बच्चा विल प्रोबेबली हैव अ लैंग्वेज डिले. ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज दैट आप जिस भी कंट्री में हैं, चाहे वहां पे जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है, आप एक लैंग्वेज ऐसी चूज कर लें जो आप बच्चे के साथ, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, डजंट मैटर, यू हैव टू kind of make sure that you're spending time with the child. And language का एक basic rule है, spend time with the child, that's it, talk to them. So it doesn't really it can be worked out easily if you have been spending time with the child and talking to them in that language. One myth I will just clarify, 1 साल से पहले कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा लैंग्वेजेस नहीं सिखानी चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए, तीसरी नहीं होनी चाहिए. There is no truth through it. जितना आप बच्चों को लैंग्वेजेस से एक्सपोज करेंगे, जितनी लैंग्वेजेस आप उनको सिखाएंगे, बच्चा उतनी लैंग्वेजेस सीख जाएगा. ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा कितनी लैंग्वेजेस सुन रहा है.
they can listen to as many languages, they will develop them, you know. So the brain is really flexible when it comes to that. So it's good that they're learning more languages. अच्छा, एक चीज मुझे आपसे एक और पूछनी थी, और ये चीज मैंने शायद अपने बेटे के साथ भी फेस की कि और ये हमारे पास क्वेरी से बहुत सारी आती है। बच्चा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन वो 12 मंथ्स का है, 14 मंथ्स का है, ब्रोकन वर्ड्स हो, बट प्रॉपर और अपनी एक लैंग्वेज को बोल रहा है, उसकी किसी को समझ में आती है, उसकी माँ को समझ में आ रही होती है, एंड बट वो जो क्लियर लैंग्वेज है वो नहीं होती, लेकिन वो प्रॉपर जुमले नहीं होते। बट मैंने ये देखा अपने बेटे के साथ कि द मोमेंट ही स्टार्ट गोइंग टू स्कूल एंड ही स्टार्ट सिटिंग, उसने 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था, सो आई नोटिस विद इन अ मंथ और सो वो जो जुमले थे वो प्रॉपर फॉर्मुलेट होने लगे, चाहे वो 3 लफ्जों के थे, 4 लफ्जों के थे। क्या हमें कंसर्न होना चाहिए कि बच्चा 12 महीने का हो गया है, 14 महीने का हो गया है, बट वो सिर्फ अपने काम की चीज बोलता है कि दे दो, कर दो, खाना, यू नो, जस्ट लाइक नो जॉब गेट डन, बट प्रॉपर जुमले फॉर्मुलेट नहीं हो रहे इवन 2 साल की एज में? Is it a pressing concern? Should we be concerned? Should we look into it? What would you say on this? Important question actually. 12 महीने पे तो बच्चा, the world is all about them. You know, वो सिर्फ एक वर्ड, जब बच्चा 12 महीने का होता है तो वो यूजुअली एक ही वर्ड में कम्युनिकेट कर रहा होता है. They use single words to communicate what they need and their job is done. So rest of it is up to them to understand. By the time they're 2 years old, they start to combine 2 words like open door, closed door, more mama, more pani, more khana, mama come. ये वाले speech आपको, language आपको नजर आने. By the time they're 3 years old, 3 to 4 word combinations आते हैं. Mama बाहर आ जाओ, mama दरवाजा बंद कर दो, mama डोर बंद कर दो, whatever. अच्छा, इस पूरे टाइम में आपको नजर आएगा कि बच्चों के स्पीच एरर्स होंगे. कार को वो तार बोलेंगे, कैट को वो टैट बोलेंगे. That is completely normal. ठीक है, that is fine. As far as they're joining words and they're making, you know, short phrases by the time they're 3 years old. अच्छा, उर्दू स्पीकिंग बच्चों का ये है, अभी जॉइंट फैमिलीज होती हैं तो वो दादी भी बात कर रही है, दादा भी बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, तो उनकी लैंग्वेज जल्दी आती है. You know, वो ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस बना रहे होते हैं. बट अगर वो 3 से 4 वर्ड भी ज्वाइन करके बात करें when they're 3 years old, it's fine. With speech errors, that is also fine. By the time they're 4 years old, उनकी स्पीच काफी क्लियर हो जाती है. कोई बाहर वाला भी उनको सुनेगा तो समझ आ जाएगा कि उन्होंने क्या बोला है. अगर 4 साल तक भी बच्चे की स्पीच इतनी अनक्लियर है कि कोई और उनको सुने तो उनको समझ नहीं आ रहा, then you need to see a speech therapist. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, एक और सवाल, और जो में अक्सर एक बिहेवियर हमारे कॉमनली फाउंड किया जाता है कि हम जब हमारे बच्चे टॉडलर्स होते हैं तो वी टॉक टू देम इन अ वेरी क्यूट बेबी लैंग्वेज, जिससे हम बात करते हैं, हम तोतले होके बात कर रहे होते हैं उनसे. डू यू थिंक दैट इम्पैक्ट्स देयर स्पीच डेवलपमेंट? अच्छा, अभी मैं कल रात को इसके बारे में पढ़ रही थी. एक्चुअली पहले जो है वो बेबी टॉक को बिल्कुल मना किया जाता था. पहले कहते थे कि आप बच्चों से कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा बेबी, इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है, मेरा बेबी ही बोले. सो बिकॉज अगर आप गलत बोलेंगे तो बच्चा भी गलत सीखेगा. And I feel कि there is some truth to it because then you're actually altering the sounds. You know, जिस तरह से बच्चे को बोलना चाहिए आप वैसे नहीं बोल रहे हो, बच्चा फिर वैसे ही सुन रहा है, वैसे ही सीख रहा है. But according to new theories that are coming in, they're saying कि बच्चे पे actually इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है because during the day जब आप आपस में बात कर रहे हैं तो वो भी सुन रहा है. The brain is not only responding to how you're talking to the baby, but it's also responding to the language that you're using among the family. You know, एक दूसरे से बात करते हुए, तो बच्चा उससे भी सीखता है. You know, there are both schools of thought. I would suggest personally कि आप baby talk ज्यादा ना करिए because आप डायरेक्टली जितनी बात करें बच्चा उसको ज्यादा अटेंशन पे कर रहा है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ये सारे हमारे कंसर्न इस वक्त जो है वो आंसर हुए हैं. अच्छा, अब हमारा वी बेसिकली हमने अपना टाइम स्लॉट पूरा कर लिया है और इतनी सारी बातें हुई कि हमें पता भी नहीं चला कि we've reached 25 minutes. We're done with most of our questions, but we are still getting a lot of questions. हम इन्हें कवर करते रहेंगे. या सामिया, if you can look into them, comment on them, that'll be also very helpful. एक सवाल यहाँ पूछा गया है कि and when human interaction is
less due to COVID. So I think सामिया ने बहुत अच्छे से cover किया कि the parent has to get involved directly and be present, which is कहते हैं ना mindful presence आपकी होनी चाहिए. Because कल ही मैं ये बात देख रही थी कि I was watching something and my son came and was talking to me. और मैं वो हाँ, and then I realized नहीं, I'm not listening to him attentively. So I had to put the phone down. And then, I called him again. I said, अब मुझे बताओ what you were talking. So हमारी आदत बन गई है, हम realize भी नहीं करते कि हम कितना engrossed होते हैं अपने phones में, अपने काम में भी. तो we have to take it aside और फिर अपने बच्चे के साथ आप जो है वो time spend करें one to one. अच्छा, स्पेशली जो मील का हमारा स्टार्ट हो गया ना कि मील खाने के टाइम स्क्रीन टाइम होना जरूरी है. आई एम नॉट द राइट पर्सन बिकॉज आई डिड दैट मिस्टेक माई सेल्फ, so it's just I did myself. बच्चा जो है they need the screen to start chewing the food and पे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप इंटरेक्ट करो, टॉक अबाउट द फूड, टॉक अबाउट हाउ द डे वाज एंड स्टफ लाइक दैट, so that is one more thing that we need to work on as society, I feel. Absolutely. And I think जो जितनी भी toddlers की मम्मीज हमें देख रही हैं, this is something that I used to do, कि कोशिश किया करें कि अपने सारे मील टाइम्स अपने बेबीज के साथ सिंक कर दें. कि अगर आप सुबह उठ रही हैं तो अपना नाश्ता बेबीज के साथ करें. You put them in their high chair. You share your meals. Egg बनाया तो उनके साथ share कर लिया. You feed them the yolk. You have your egg whites together. You feed them a healthy diet also, and you talk to them about food. Try, क्योंकि जब आप उनके साथ बैठे होंगे तो उनकी अटेंशन आपकी तरफ होगी. टीवी ना ही खोले तो ज्यादा बेहतर है. और स्पेशली जब फादर्स भी प्रेजेंट हो जाते हैं फैमिली में, मोस्ट टाइम्स होता ये कि यूजली लंच टाइम पे फादर्स नहीं होते, डिनर्स पे ही हमें ज्वाइन कर रहे होते. So make sure that your dinner time is your family meal time, that everybody is there and आप अपने दिन की बात कर रहे हैं. ठीक है, you can put TV in the background as white noise चल रहा है, but then when children see कि अम्मा अब्बा बात कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, चीजें हो रही, so they get more involved into it. And then खाना भी वो आदत खत्म हो जाती है कि स्क्रीन लगेगी तो ही खाना लगेगा, तो ही खाना खाया जाएगा, करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर अप्रिशिएटिंग दिस. अच्छा, एक सवाल आया, ये हम लास्ट लेंगे, उसके बाद हम दोबारा आपके सामने आ सकते हैं. काफी सारे कंसर्न हमारे आंसर हो गए. अगर आपके पास और भी सवालात हैं, यू लेट अस नो, वी ट्राई टू कवर देम इन द नेक्स्ट सेशन. हाउ टू मेक किड्स express his emotions, for example, what he needs or why is he accept. You have to mention the age of your child. अच्छा, और बच्चे की स्पीच क्लियर कैसे की. अच्छा गाइस, आप लोग अपने बच्चों की ना एज नहीं लिख रहे, so that is very difficult for us to gauge कि हमने किस एज के हिसाब से इस बात को एड्रेस करना है. So आप अगर अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने बच्चों की एज भी मेंशन करें, so because this is a very vague question. Now, nobody would understand कि बच्चे की स्पीच, how old is the child, किस तरह से उसको एड्रेस किया जाए. जी जी जी. नहीं, मैं एक Ashron, I think parents are worried, so मैं I'll just basically जहाँ तक emotions की बात है, using books is the best way to target it. ठीक है, ज्यादा आप बुक्स यूज करेंगे जिसके अंदर आप कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, हाउ द कैरेक्टर इज फीलिंग इफ द आइसक्रीम हैज फॉलन डाउन, oh, the character, whatever, the boy is so sad because the ice cream fell down, so sad, happy, angry, ये सब books में बहुत easily मिल जाता है. And then generalize it. When the child is happy, label it. Oh, you're happy because it's your birthday. You're happy because you got a present. So start labeling it. And जब तक आप बच्चों को सिखाएंगे नहीं, तब तक कुछ expect करना is just like taking an exam without teaching them. So teach them first, and then maybe they can express better. Speech clear करने के लिए you have to see a speech therapist. Live sessions में I won't be able to answer questions related to speech sounds because speech therapists जो हैं वो properly placement देखते हैं tongue की और motor structures की, and then they target it. अच्छा सामिया, before leaving, I think this is the most important question. जब वालिदैन सबसे पहले अपने बच्चों, जैसे बार आपने हमें माइलस्टोन्स और रेड फ्लैग्स भी बताए कि कौन सी एज पे हमें देख लेना चाहिए. जब वो 12 महीने में देखते हैं कि बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या उससे पहले भी, या जो पहला वर्ड आ जाना चाहिए, who is the first person they are supposed to go to? Pediatrician या डायरेक्टली थेरेपिस्ट, क्या या फिर एक ट्रायंगल बने, जैसे कि मेरे केस में ये हुआ था कि my pediatrician told me कि भाई आप इनके पास चली जाएं. Which is the right course of action? क्या करना चाहिए सबसे पहले वालिदैन को?
देखिए, if you're abroad and not in Pakistan, then it's always the pediatrician. But a lot of ठीक है. times पाकिस्तान में pediatricians को पता नहीं होता कि उनको speech therapist के पास कब भेजना है. And Oh, okay. this is a huge gap in our society. यहाँ पर hospitals में pediatricians को नहीं पता होता कि 12 महीने पे अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो they go see a speech therapist after that. वो mostly यही बोलते हैं वो बोल लेगा and a lot of times they're coming to us at 3 by the time the child is 3 years old and then they're like, oh, उनके डॉक्टर ने बोला था 3 साल तक वेट करो. तो आई वुड सजेस्ट अगर आप पाकिस्तान में प्लीज आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास डायरेक्टली एक कंसल्टेशन ले लीजिए जैसे ही आपको थोड़ा सा भी शक है कि बच्चा नहीं बोल रहा. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. So that answers most of your queries. Thank you so much, सामिया, हमें ज्वाइन करने के लिए. और थैंक यू टू आवर वंडरफुल ऑडियंस. आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए. हम इंडिविजुअली कोशिश करेंगे टू गेट बैक टू देम. विद दिस वील से अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू. अपना बहुत ख्याल रखिए जी. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.